हेलो, वेलकम यू ऑल टू LawSikho। तो आज हम दो टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। द फर्स्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग वेदर सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू decriminalize defamation. Now, why this question came? The reason behind that is the recent Supreme Court's observation. So, on September 22nd, the Supreme Court suggested that reconsidering the criminal defamation that actually highlights the tension between the two fundamental rights. The first fundamental right, that is regarding freedom of speech and expression under Article 19(1)(a), and the second fundamental right, that is right to reputation, that is a part of right to life. So for example, if I defamed Mr. A, अब मिस्टर ए का यहाँ पे कौन सा राइट वॉलेट हो रहा है, दैट इज आर्टिकल 21, राइट टू रेपुटेशन. अब नाउ इफ आई एम एक्सप्रेसिंग समथिंग, then this is my freedom of speech and expression. अब speech and expression पे we have a restriction on the from the name defamation. So defamation, this is a restriction on my right of freedom of speech and expression. Okay, now criminalizing defamation or defamation as a criminal offense is in the favor of Mr. A because he want to protect his right to reputation. Now defamation under law, so defamation under law, if we basically see, it is both civil and criminal law. Now for criminal law, it is under section 356 of Bharatiya Nyaya Sanhita. Earlier it was section 499 of Indian Penal Code of 1960 that says if by words, whether spoken or written, or with any sign or visible representation or any imputation, ironical or indirect, if you harms anybody's intellectual character or lowers his moral or lowers the caste, professional, social standing or lowers his crediworthiness, or it imputes a disrespectful, disgraceful bodily condition, and it can be against an individual whether he is living or dead, or it can be against the companies, or it can be against the association also. So by any of the forms, that whether it can be word, sign or imputation, अगर उससे if you are lowering down the intellectual character, moral, caste, profession, creditworthiness और उसकी bodily condition को, भले वो कोई इंडिविजुअल हो, लिविंग डेड, भले वो कंपनी हो या एसोसिएशन हो, सो ऐसे सिनेरियो में इट विल कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन अंडर क्रिमिनल लॉ. नाउ under criminal law, defamation is an offense. With that, there is also something called the civil defamation. What is this defamation? Civil defamation, it is a civil wrong, a private wrong. And what is the remedy of it? The remedy is the monetary compensation. Now that there is only one defense of the civil defamation, that is a truth. And what is the object behind civil defamation? That is to restore the reputation of the individual person. On the other hand, when we see the criminal offense, अगर इसका nature देखें, so it is a public wrong. Now, how it is a public wrong or public offense? Because by affecting an individual's reputation, actually what I am doing, I am affecting the social harmony in the society, in the community. The punishment or the remedy, if we say, it will be fine and or imprisonment. And what are the essentials of the element? First, statement must be defamatory. Second, directed at a person or a group, or it is published, communicated to a third party. Now, one more thing is important here, that the mens rea, the intention or the knowledge to harm, or the guilty mind, and the defense is the truth and the criticism. Now criticism may it will have so the criticism of the criminal defamation is that कि many of time it is misused, especially against the journalist or the activist. अब अगर सिविल डिफेमेशन होता है तो सिविल डिफेमेशन में तो कॉम्पनसेशन होगा, ठीक है, और कोई डैमेजेस होगा. बट हियर इफ वी सी इन क्रिमिनल डिफेमेशन, देयर विल बी स्ट्रेट अवे द इम्प्रिजनमेंट with or without fine. Now in 2025, okay, the Supreme Court have observed that criminal defamation can be reconsidered. Now what was the case? The background of the case is that the Wire, it is a reputed online news channel or news portal, we can say, they made a reporting against a JNU professor. He said it was the reporting basically on a dossier, ठीक है, that is
prepared by a professor. It is linked with a professor that he have prepared it, who is involved in sex racket and the separatist activities. Now the legal proceeding that is started, what professor have done when this particular reporting has have done under the against the professor. So professor have filed a criminal defamation in 2017. अब दिल्ली मजिस्ट्रेट जो है वो समन इशू करते हैं अगेंस्ट द वायर. Supreme Court in 2023 direct the reconsideration. The magistrate, although it came from Supreme Court कि जो मजिस्ट्रेट ने समन इशू किया है इसको रिकंसिडर करना चाहिए. Magistrate reconsidered it and again reissued the summon in January 2024. And when this was challenged before the Delhi High Court also upheld the summons in May 2024. So now the current situation is that the wire has now again appealed in Supreme Court of India. Now Supreme Court must now consider the criminal defamation in the light of 2016 judgment that was given in the case of Subramaniam Swamy versus Union of India. So in 2016, the politician Subramaniam Swamy, he challenged the section 499 of IPC, that is a criminal defamation. Now, what was the case? So he said that it is a colonial era ka law and it have a negative effect on the free speech, that is Article 19(1)(a). So the court's ruling was that the criminal defamation is constitutional. Court observed that under freedom of speech and expression, Article 19(1)(a), it is not absolute. There are restrictions and criminal defamation is one of the restriction to it. So defamation has an independent status beyond a criminal wrong. So although it is a criminal wrong, but still it will become under the purview of criminal law also. The reasoning is that reputation is integral to the dignity of the life, the liberty of the life under Article 21. For protecting it, we are continuing with this criminal defamation. So harm to individual reputation, it can affect the social harmony, it can indirectly affect the society. So therefore the wrongs which is against the society that can be categorized under the criminal offense. Now truth is only the good or the public, the truth as a defense is only if for the public good. So the court also observed जो भी punishment दे रहे हैं that should be in the proportionality. The exceptions safeguard fair comment, criticism, judicial reporting. This all should be addressed. Okay. Now, the chilling effect argument rejected by the court with which says it is a restriction of Article 19(1)(a). So the essence is that they have created in Subramaniam Swamy case, the court's ruling was that we are creating, or the law already have a balance between Article 19(1)(a), that is freedom of speech, and Article 21, that is right to reputation. So reputation of one cannot be crucified at the altar of the another's free speech. It was the observation of the court. Now the fresh constitutional challenge. A person facing, so if for example we want to reconsider it, so first person who is facing the prosecution must file a petition before the Supreme Court for reconsidering the Subramaniam Swamy case of 2016. Now, SC generally does not reopen the settled law on its own, but reconsideration of the precedent can be happened. Now, 2016 judgment, Subramaniam Swamy judgment, it was given by the 2 judges division bench. Now, if court wants to reconsider it, the bench should be of more judges, might be more than 2. So it may be 3, 4 or 5 also. If it is a 5 judges bench, then even this matter can be referred to the constitutional bench under Article 145(3). So there is a now shift in judicial approach. We can see the current position is that the Supreme Court treats the reputation under Article 21 as a matter of public interest requiring the criminal sanction. Now to decriminalize, the court must accept the civil remedies is also there and it is sufficient without the criminal penalties. So this is all about the criminal defamation. So we will see whether Supreme Court will going to reconsider this in the present case, the wire case, or whether a person will go and file a petition by challenging its constitutional validity and requesting for the reconsideration of Subramaniam Swamy case. Now the second case, very interesting case. Now regard more than a case, it is a
order by the UP government. So what UP government have said, UP government completely banned the rallies which will be based on caste. तो हम देखते हैं कि जो कास्ट बेस्ड रैलीज होती है टाइम एंड अगेन हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में होती रहती है। रिसेंटली वी सॉ इन मुंबई, ठीक है, मराठा कम्युनिटी के जो कास्ट के लोग थे दे हैव डन द प्रोटेस्ट रैलीज, ठीक है, फॉर व्हाट, फॉर रिजर्वेशन। तो सो कंसर्न अगर हम देखें तो मेनली रिजर्वेशन या ऐसी कुछ डिमांड को लेकर कास्ट बेस्ड रैलीज is very common in our country. Now UP government by a order they have prohibited, they have banned the caste based rallies in the state of UP. So what is the case? So now what this ban is come following the Allahabad High Court judgment. The Allahabad High Court judgment that actually talks about the prohibition of use of display of caste names, mention of caste in police record or in other government document. So Allahabad High Court have said why we are using this caste names or why we are using the caste banners etc in the government or the official documents. So now the order that is passed by the UP government that banned this use of caste name, and with that they also said that rallies of caste-based rallies should not be happen in the state of UP. So we'll understand complete case, what is the complete background. So government order on caste-based displays. The very first thing, the first part of the order that says ban on political rallies and public displays. So complete ban on caste-based political rallies across the state. Second thing, what is the reason that is cited behind that? The reason is that it is threat to the public order and the national security, national unity. So national unity और जो public order है उसके अगेंस्ट कहीं ना कहीं अगर कास्ट बेस्ड रैलीज होंगी तो ये पब्लिक ऑर्डर और नेशनल यूनिटी को अपने आप में थ्रेट होगा। उसके अलावा जो साइन बोर्ड, स्लोगन्स और फॉर एग्जांपल कुछ एरियाज ऐसे रहते हैं जहाँ पे एक कास्ट डोमिनेटेड है, तो कई बार क्या करते थे कि कास्ट टेरिटरीज करके लिखते थे। फॉर एग्जांपल कोई कास्ट है XYZ, तो यहाँ पे लिखा रहेगा XYZ गली या XYZ मोहल्ला और XYZ क्षेत्र या टेरिटरी। नाउ दिस शुड बी नॉट डन, दिस शुड बी रिमूव फ्रॉम द पब्लिक स्पेसेस। उसके अलावा कोई कास्ट बेस्ड कास्ट के नेम के कोई साइन बोर्ड्स या स्लोगन्स भी नहीं लगा सकते हैं। उसके अलावा कई बार हम ये देखते हैं कि व्हीकल्स पे कास्ट के नेम्स लिखे रहते हैं, स्लोगन्स लगे रहते हैं, स्टिकर्स होते हैं। नाउ दैट शुड ऑल्सो बी नॉट अलाउड। और अगर ऐसे किसी व्हीकल पे मिलता है तो दैट व्हीकल विल बी चालान्ड अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट। नाउ पुलिस एंड प्रोसीजरल रिफॉर्म्स। अब यहाँ पर तो साइन बोर्ड्स हो गई, रैलीज की बात हो गई। अब उसके अलावा जो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड है उसमें भी कास्ट से रिलेटेड कोई भी मेंशन नहीं होगा। सो द वेरी फर्स्ट थिंग एफआईआर में कास्ट का कॉलम रहता है, वहां पर कास्ट नहीं होगी। अरेस्ट मेमो, रिकवरी मेमो, इसमें भी कास्ट का कोई भी मेंशन नहीं होगा। उसके अलावा CCTNS दैट इज क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। सो जैसे हम CID वगैरह में दिखते हैं कि डेटा फिट करते हैं और पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन का क्या क्या रिकॉर्ड है, ठीक है। एक्चुअली वी हैव अ काइंड ऑफ अ सिस्टम एंड नेटवर्क फॉर दैट, ठीक है। स्पेशली 2611 के बाद में ये सिस्टम, ये पर्टिकुलर CCTNS जो है नेटवर्क एंड सिस्टम जो है ये डेवलप होता है विद द इन्वेस्टमेंट, हैवी इन्वेस्टमेंट ऑफ 2000 करोड़ रुपीस इन 2008 और ऑलमोस्ट आज इसमें 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है। अब इसमें भी कास्ट का मेंशन होता था, वो भी अब नहीं रहेगा। इसके अलावा अगर कोई FIR है या अरेस्ट मेमो है या रिकवरी मेमो है तो इसमें उस अक्यूज का नाम उसके फादर का नाम होगा और फादर के नाम के साथ साथ मदर का नेम भी साथ ही साथ होगा। लेकिन इसको एक एक्सेप्शन है, वी ऑल नो इन आवर कंट्री कास्ट बेस्ड ऑफेंसेस भी होते हैं, ठीक है। अगर आप कास्ट बेस्ड अगर किसी पर्सन का इंसल्ट करते हो या उस पर कोई ऐसे रिमार्क करते हो तो उसके लिए वी हैव द SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट ऑफ 1989। अब यहाँ पर कास्ट का मेंशनिंग इज इंपॉर्टेंट, देयरफॉर दिस इज द एक्सेप्शन। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी मॉनिटरिंग होगी। कई बार सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि जो स्लोगन्स है या जो डिस्प्ले है कास्ट को ग्लोरीफाई करते हैं या किसी पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट करते हैं, तो सोशल मीडिया पे भी इस चीज को लेकर मॉनिटरिंग होगी, ठीक है। और स्टेट जो है इसके अगेंस्ट भी एक्शन लेगा अगर वो हेट स्पीच से या हेट मैसेज से रिलेटेड है। ये सारा रूलिंग जो है रूलिंग आता है, रूलिंग के बाद में, ठीक है, फिर
ऑर्डर आता है। तो सबसे अब हमने ये देख लिया कि ऑर्डर क्या है, अब हम देख लेते हैं कि रूलिंग क्या आया था। जो उस रूलिंग को देखते हुए यूपी गवर्नमेंट ने इस ऑर्डर को लेकर आए हैं। तो बैकग्राउंड ये था कि पिटिशनर प्रवीण छेत्री, ही वॉज अरेस्टेड इन अप्रैल 2023। एलिगेशन क्या था? द एलिगेशन वॉज कि ही वॉज स्मगलिंग द लीकर, अल्कोहल का स्मगलिंग कर रहे थे, ठीक है। अब फॉर क्वेश्चनिंग द एफआईआर ही वेंट टू इलाहाबाद हाई कोर्ट। नाउ इन इलाहाबाद हाई कोर्ट, व्हेन द जस्टिस दिवाकर, the judge of Allahabad High Court, he was reading his FIR, the seizure memo, he saw the mention of caste. He asked the police कि why there is a mention of the caste, and not only in this case, other cases में भी if we see there is mention of the caste of accused. Why this regressive practice is still going on in the country in the 2025 India? Our progress should be progressive, modern, or of this unified India का mindset से we have to do the work. And he directed the UP DGP to file a personal affidavit and explain him why castes are still mentioning in our FIR, arrest memo, and other kind of documents. So now the interesting thing is that कि प्रवीण छेत्री was a state of UP and another. In this case, प्रवीण छेत्री को रिलीफ तो नहीं मिला, FIR क्वॉश नहीं हुआ, but it given or it actually initiated or it ignited or it actually sparked out a debate regarding mentioning of the caste in the police procedure and the police record. Now, और हाई कोर्ट के क्या इससे रिलेटेड ऑब्जर्वेशन थे? हाई कोर्ट सेड कि रिकॉर्डिंग कास्ट ऑफ एक्यूज्ड इज ए लीगल फैलेसी, है ना। पहले कास्ट, जैसे डीजीपी ने यहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए एफिडेविट में कहा था कि किसी पर्सन को रिकॉग्नाइज करने के लिए कई बार क्या होता है कि नाम सेम होता है, सरनेम कई बार नाम सेम होता है, ठीक है, फादर्स नेम सेम होता है, तो कास्ट से भी हम आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे लिए इजी होता है। बट हियर जस्ट सेड कि अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो नाउ वी हैव द मॉडर्न टूल, आधार, बायोमेट्रिक, कैमरा, वी हैव दिस टूल्स, ठीक है। व्हाई वी आर स्टिल राइटिंग द कास्ट ऑफ द एक्यूज्ड? विद दैट, court also observed कि law enforcement often reflects and reinforces the caste prejudices. So कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी, हमारी मेंटेलिटी में कास्ट जो है वो अभी भी बसी हुई है, और अगर हम इसको कंटिन्यू यूज रखेंगे तो दैट कास्ट प्रिजुडाइसेस और प्रीफिक्स नोशन विल कंटिन्यू। सो ऑन कास्ट एंड सोसाइटी, कास्ट सिस्टम इज इक्वल टू is actually threat to our secularism and national integrity. So therefore he said even the caste identifies, many people write their caste on the vehicle, houses, social media, it actually reflect our cultural narcissism, and it is actually a toxic digital masculinity that is rooted in caste. So therefore he said ki the people who are promoting their caste, they are anti-national and contrary to the unity and the progress of our country. Because in our constitution, in many of the provision, caste khatam ho, iske liye we are doing so many things. Even he quoted Ambedkar, Raja Ram Mohan Roy, Jyotiba Phule, Savitri Phule, Vivekanand, Narayan Guru, Vinoba Bhave, ठीक है, दयानंद सरस्वती, and many people who actually spend their complete life to endorse, to make the society casteless. Now, what is the issue in implementation? Now, issue in implementation is that so the issue in implementation mein there are two things. First, court have given the binding direction. So what binding direction they said? They said कि जितनी भी FIR में ये caste tribe mention करते हो, just remove that. Notice boards में, memos में भी caste mention होती है, remove that. No need of that, है ना। आधार नंबर mention करो, you have other identities. Public spaces में people used the poster, the signboard of the caste, that should be removed immediately. With that, SOPs frame the standard of procedure to prohibit the caste disclosure in investigation. तो नई SOP बनाओ जिसमें ये ध्यान रखा जाए कि इन्वेस्टिगेशन में कास्ट का मेंशन ना हो। उसके अलावा कोर्ट ऑल्सो गिवन द रिकमेंडेशन टू अमेंड द मोटर व्हीकल रूल्स। यहाँ पर मोटर व्हीकल रूल्स में अमेंड करो जहां जहां कास्ट स्टिकर, स्लोगन्स लिखे हुए हैं, तो मोटर व्हीकल एक्ट में स्पेसिफिक प्रोविजन यहाँ पे ऐड करो कि कहाँ जहाँ पे कास्ट का मेंशन है, कास्ट स्लोगन स्टिकर है, दैट पर्सन शुड बी पनिश्ड।
IT rules 2021 में do the amendments, and the people who are glorifying their caste or creating hate again a particular caste, those people should be punished under IT rules. तो उसके लिए add the provision. Other than that, media literacy, anti-casteism campaign that should be run on the social media, especially targeting the youth. Other than that, create citizen reporting portals and add apps to report the caste-based violence. Now, till this everything was fine. Now what UP government have done? So order सिर्फ इतना था. Now what UP government have done? UP government said further, they went 2, 3, 4 steps further, and what they have said they said कि now caste based जो rally होंगी, in furtherance of that, अगर caste based rally होंगी, so that should also be banned. So court deprecated the caste based rally but gave no direct ban. ठीक है, कास्ट बेस्ड रैलीज पे कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी, बट इसे बैन करने की बात नहीं करी. नाउ ये जो बैन करना है, दैट इज गवर्नमेंट विच वेंट फर्दर एंड इशू अ कंप्लीट प्रोहिबिशन, द मोस्ट पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट स्टेप इन दिस पर्टिकुलर ऑर्डर, एंड दैट एक्चुअली बिकेम द सेंटर पॉइंट ऑफ द डिस्कशन फॉर द यूपी गवर्नमेंट्स ऑर्डर. So this is it for today. Thank you so much for listening me. Stay tuned to LawSikho.